मैं वहाँ पिघल गया था। आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं एक दूसरे को डेट करने के बारे में? तो क्या सोचा है फिर? वेरी गुड एडवाइस, लव गुरु सिद्धार्थ निगम, लव गुरु। मैं देख रहा हूँ फंसता हूँ, ये रिकॉर्ड कर रही है ऐसे। Sometimes I believe कि I don't have anyone except my fans and my family. Ambassador of Korean tourism, and I hope that I can actually become the bridge between Korea and India. घर था ना गाड़ी थी। 2-3 लाख 4 लाख लोग लाइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। I'm a star overnight and they start behaving differently. Hello everyone, today we are here with some of our famous superstars, we can say, and social media influencers. They are the actors of today. Please welcome Anushka and Siddharth. Welcome to Pinkvilla, guys. Thank you. So we are here for the success of their song Aadat 2. So what's going on in your mind right now? I'm very happy, very grateful because every time I open Instagram or any social media platform, there's so much love, and I'm so happy with the response. Siddharth. And I genuinely feel happy when we do any project, और फिर उसके बाद जब हम इंटरव्यूज करते हैं और फिर सामने से जब कोई बोलता है that कैसा लग रहा है आपको आपकी सक्सेस से, तो अच्छा लगता है that हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, सबको बहुत पसंद आया। एंड जो म्यूज़िक वीडियो जितनी मेहनत हमने की वो सारी मेहनत को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो वी आर रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। Yeah, because I think it's only a 3.5 minute video, but इस वीडियो के पीछे there's like so many people working for it, you know, people who are on set, people working behind the camera. There's so many people who are involved in one single project. So not only for us, I think for them also it's a really big moment. So we are happy. Yeah, so it's actually a movie-worthy story which is summed up in a few minutes. How was the shoot experience? Usually you all have shot for movies, for serials, but when it comes to music video, how is the feel? How is the environment and atmosphere? I believe the atmosphere was same because when we shoot a movie, एक होता नहीं कि हमारा एक टारगेट होता है कि whatever we are making, it has to be good because we are going to present the same thing to the audience, जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया है। बिकॉज हमारे तेरी आदत 1 को लोगों ने इतना प्यार दिया स्टोरी को लेके, द स्केल जिस स्केल पे हमने उसे शूट किया था। सो हमारा एक यही मोटिव था कि इफ़ वी आर कमिंग अप विद अ सीक्वल, इफ़ वी आर कमिंग अप विद अ पार्ट 2, then we have to do everything double, like Correct. be it action, be it story, be it music. So that was our first goal. तो इसीलिए हर एक चीज़ बहुत ही फोकस्ड होके प्रॉपर 100% सब ने दिया है, फ्रॉम म्यूजिक टू अस, टू आवर स्पॉट दादा, टू आवर एक्शन टीम, टू आवर डीओपी टीम। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वी वर शूटिंग अ म्यूजिक वीडियो, ऐसा लग रहा था कि वी आर शूटिंग अ म्यूजिकल शॉर्ट action film. Right, Correct. absolutely. And people are also taking it that way. Yeah. Literally, somebody called my mom the other day and they were like, oh, koi film aa rahi hai na Siddharth and Anushka ki. I'm like, wow, if there people are thinking that this is just a part of a film or this is just a song of a film, that means that the entire team has worked so hard to make it so grand and so amazing that, you know, people are taking it that way. And also, like he said, that the first part was already a hit. People really like it till this day. You know, I see edits from that song. So it was a really big responsibility for us to, you know, make the story really nice, make sure that every single shot is really nice. And I have to thank the entire team of Be Live, our DOP, our director, music, Siddharth. He has done incredible. I think I'm really happy that, you know, I could share the screen space with him because he's really hardworking. If you see the way he does action, is just incredible. I think he's one of the finest actors in this generation. Absolutely. So yeah, I mean, it was a great experience. We had our fun, but also you know, it turned out really well and people are taking it so nicely. So it's been a very pleasant experience. तो ये भी बहुत कम होता है ना कि गाने का सीक्वल आया हो कभी। Actually, आई थिंक इसमें तो दोनों चीज़ें अलग थी कि एक गाने का सीक्वल आया एंड सेकेंडली अगर आप देखेंगे दिस इज द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो जहाँ पर इतना एक्शन है। करेक्ट। और हम आपने जो लास्ट में जब आपने देखा होगा तो पूरा का पूरा एक्शन 1 शॉट एक्शन था। तो मतलब इस तरह अभी तक मैंने किसी म्यूजिक वीडियो में नहीं देखा जहाँ पर प्रॉपर एक्शन दिखाया जा रहा है, प्रॉपर उसे शूट किया जा रहा है, प्रॉपर उसे उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ पे प्रॉपर एक्शन टीम थी, प्रॉपर उस चीज़ को कोरियोग्राफ किया गया एंड देन 1 शॉट उसको शूट किया गया। तो आई थिंक ऑल टुगेदर इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस दैट हम इस इतने अच्छे प्रोजेक्ट का हम सब हिस्सा थे। गाने में देयर इज दिस सीन लास्ट में जहाँ आप इन्हें हक करते हैं एंड ऑल योर एंगर, योर रेज जस्ट मेल्ट्स डाउन। सो कैन वी से वहाँ आप पिघल गए? जी बिल्कुल। I know why she said अनुष्का ने जैसे मुझे हक किया था ना, मैं वहाँ पिघल गया था। ओह अनुष्का हक इतना अच्छा था एंड तो
इस पूरे म्यूजिक वीडियो में जो एंगर ये लेके घूम रहा था, तो इसके अंदर सिर्फ एंगर है, उसकी जो कामनेस है, उसकी जो पीस है, वो अनुष्का है, मतलब इन द म्यूजिक वीडियो। सो जब अनुष्का ने उस लड़के को बिट्रे किया था, वो छोड़ के चला, और वो छोड़ के उसे चला गया था, तो उसके बाद उसकी लाइफ में सिर्फ एंगर था, और वो अपना एंगर उसे अगर कोई काम कर सकता था तो वो अनुष्का ही थी। एंड देन व्हेन शी हग्ड हिम इन द लास्ट पार्ट, तो उसको डेफिनेटली वो काम हो ही जाता है। सो या तो आप दोनों के साथ में रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो दैट कोई प्रॉब्लम है, बात आगे बढ़ चुकी है and you don't know how to solve it, Right. so has there ever been you just hugged someone and it just the problem just got solved and the relationship got saved? I think hugs are the best. I am a hugger. Genuinely, hugs actually mean so much. Like you mentioned, that hug is also very special. If you see, when I'm hugging him, we both actually, I didn't notice it at that time, but when we were seeing the video for the first time, if you see, I'm hugging, but then my hand is behind his neck and I'm doing like this. Like it's like a way of calming him also. So hugs actually mean a lot. I think for me also, hugs really hold a special place in my heart. And not only to go away from, like you said, that if there's a problem, or if you're fighting, if you're not understanding what's happening, hugs actually can solve a lot of things. I think hugs say a lot of things that words can't express. hugs are very special. Yeah, Very absolutely. special. In the song, you all have played girlfriend and boyfriend, Right. but since you all know each other for a really long time, Right. how do you feel Siddharth would be as a boyfriend? I think he is really funny. Okay, so he will have a very good sense of humor, but he's also a gentleman. So he'll keep those small details in mind, which is really, really nice about him. That he'll remember what are the small details that I might have said in a conversation. So he does that in a friendship. So imagine in a relationship, he would also do that. He'll be a gentleman. He would make her laugh and. खुश रहेगी मेरे साथ, जो भी है। Of course. take her on a drive because he loves to drive cars and all of that. So yeah, I think he'll be a good boyfriend. तो क्या सोचा है फिर? And how would she be as a girlfriend? अरे, she's amazing. No doubt. As a girlfriend, I'm telling you, she will become your mother. Okay. And mother in a very nice way, like she will, in a very nice way, she will like take care of you. She will also know what you like, what you dislike, and she will always help you. So I think a boy needs that only, understanding. Someone उसकी लाइफ में, अगर एक लड़के की ज़िंदगी में उसकी माँ से बड़ा और कोई नहीं होता है, the way उसकी मम्मी उसका ख्याल रखती है. So when a boy finds a girl जो कि अंडरस्टैंडिंग है, जो कि उसका ख्याल रखती है और जो उसे समझती है, so that's it. So I think she has all that good in her. Oh, तो फिर क्या सोचा? आप लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं एक दूसरे को डेट करने के बारे में? हमने तभी नहीं सोचा था कि हमारी केमिस्ट्री अच्छी रहे. वही बोलने वाली थी. क्योंकि अभी भी जब आप यहाँ फंस गए थे लिफ्ट में, अरे the way यार, she was enjoying that moment, you had no idea वो मतलब आप record देख कर रहे हैं रही कितनी थी. अच्छी दोस्त है कि उसका दोस्त फंसा हुआ है लिफ्ट में But she was और enjoying. बाहर बात चल रही थी कि 5 घंटे इंसान एक फंसा हुआ था, गर्मी के मारे ये बेचारे असली की दोस्त सांसें रुक होते गई हैं थी. जो पहले हंसते ये हैं. वीडियो बना रही है और हंस रही है कर रही है. मैं ऐसा देख वो रहा हूँ, असली दोस्त होते हैं जो पहले हंसते हैं फिर फिर हेल्प करते हैं. तो इसलिए हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं. आई रियली डोंट वांट टू लूज दिस. आई हैव टोल्ड हिम, मैं तो उसे धमकी दी है कि ये मतलब तुम बदलना मत, ऐसे ही रहना. हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, टच वुड. So it's yeah, we really have we really do have so much fun. I think there's a side of me that comes out when Siddharth's there that nobody else knows about, and I think there's a side of Sid that only comes out when I am around and nobody knows about. So yeah, we really have a lot of fun. Absolutely. हम बहुत सा जेलअप करते हैं. Like whenever we meet, we always laugh. We talk about things. We talk about our personal things also. Life, career, work, everything. So I think that's why we gel up very good. Yeah. Okay. So when you all meet, because you both are in the same industry, same Right. profession, sometimes do you all meet each other and be like, काम की बात नहीं करते, कुछ और बात करते हैं? See, the thing is, पता नहीं ऐसे होता है मेरे साथ. मैं जब सिद्धार्थ के साथ बात करती हूँ, the conversations kind of
just fall into place. Like we don't have to think about what we are talking about. And like he said, we have a range कि हम serious बातें भी कर सकते हैं, but we can also talk about our work without it feeling like this is a competition. मैं share नहीं कर सकती, वो share. उल्टा we take it as an advice क्योंकि what will Siddharth would have a nice advice for me or I would have a nice advice for him. Then talking about personal life we go through. After all we are 20, 21, 22 year old people also. So हम वो भी discuss करते हैं कि how our lives are very simple but sometimes complicated at times. So we discuss that also. So it just falls into place. We don't have to discuss कि अच्छा ये बात कर सकते हैं. I don't feel कि अच्छा ये बात करनी पड़ेगी, ये बात नहीं करनी चाहिए. So it's very easy. It's a good thing that आपके ऐसे दोस्त होने चाहिए जो सेम फील्ड में होते हैं और आप उनसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं एनीथिंग फ्रीली विदाउट एनी कंपटीशन, विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट jealousy. You can talk anything about your your career, about them. It is very important to have such friends because हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री के बाहर के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं they might not understand what we are going through. हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, फिर इंडस्ट्री में कैसी चीज़ें क्या हो रही है. बट एक सेम इंडस्ट्री सेम फील्ड से जब आपको कोई दोस्त होता है जिससे आप फ्रीली शेयर कर पाते हो चीज़ें, डिस्कस कर पाते हो कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एंड आई फील दैट हमारी बॉन्डिंग वैसी ही है. बिल्कुल. एंड वो मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों में मैं जब बात करती हूँ मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ही इज़ जजिंग मी और ही इज़ गेटिंग जेलस और एनीथिंग. ही इज़ वेरी सिक्योर विथ हिमसेल्फ एंड आई रियली लाइक हैविंग फ्रेंड्स और सिक्योर विद देमसेल्व्स. एंड आप उनके साथ बात करो तो आपको वो डर नहीं लगे कि अरे यार वो इंटिमिडेट हो जाते हैं. वो तो देयर इज़ नो sense of jealousy. We just support each other. We get inspired think before talking to each other. Absolutely. Like we can share anything. Like यार मेरा ये प्रोजेक्ट का मैंने ऑडिशन दिया था, ये हुआ नहीं यार, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, I don't know what is happening, क्या किस चीज़ में लैग कर रहा हूँ मैं. Then अब ये बात अगर मैं किसी ऐसे दोस्त से करूँ जिसको पता ना हो इस इंडस्ट्री के बारे में, तो अरे यू आर डूइंग गुड, wouldn't relate. बट वो रिलेट नहीं कर पाएगा. बट अगर मैं अनुष्का से बात करूँ, शी माइट टेल मी नो आई थिंक ये चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, यू शुड गो देयर. दैट इज हेल्पिंग, दैट इज pushing each other up. Neither ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को पुल करते हैं. We always try to push each other. We always try to support each other. Absolutely. कल को कुछ भी होता है, we always like you're doing good. I'm gonna help you and I'm gonna support you. तो अच्छा भी लगता है. I just say he's my love guru also. He gives me relationship advice. Love guru? Is it? I am not a love guru. He gives me relationship advice also. Oh, like, जैसे Anushka, मैं बहुत experience listen, ठीक है, when you get into a relationship, don't do this, okay? This is not right for you. Don't get into boy trouble. Like he'll fully ऐसे मेरे को sometimes will get into full deep कि नहीं, you're a nice person. You're supposed to be with a nice person. I'm like, oh, thank you so much. So he gives me relationship advice also. You take those advice. Absolutely, because I told you, it's great advice. Very good advice. Love guru. Siddharth Nigam, love guru. Oh, come on. Just lift में फंस जाता है, वरना ऐसे हाँ, मतलब कभी कभार हो जाता है. आप लोगों की जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही है. You all have started as child artists and वो एक consistency maintain करके रखी है right from the start, and now you all have admirers from all age groups. So how does it feel to come this long way? You have stepped into the Korean entertainment industry. Right. You're also the first Indian brand ambassador. Right. You are a martial art expert, great at what you do. You've done Bollywood also now. How does it feel? You look at the entire experience and the journey. I mean, see, it's very inspiring when I look back and I get very motivated to even do better. Like every morning I wake up and I remind myself that sometimes what happens, that हम अपने goals के पीछे इतने भागने लगते हैं and we are just thinking about our goals. We're like what's not working out. We're only thinking about what's not working out. But you should also sometimes sit and think that 5 years back I was trying to manifest this life, and right now what I have is what I wanted to be when I was 13. So I'm really grateful. By God's grace, this year has been really good for me. Representing India on an international level is a really big responsibility for me, but I hope I can do that well. I'm the first, like you said, the ambassador of Korean tourism, and I hope that I can actually become the bridge between Korea and India.
Representing India all over the world. Yeah, and it was my dream to do that. I used to look at K-dramas and be like, oh, I also want to do And something I saw that like video that. also. I think. You saw, you know, it was such a surprise. They told me that okay, Taekwondo group is going to probably invite you on stage. So I'm like, okay, you know, मैं जाऊँगी और मैं ऐसे pose करूँगी and you know I'll just be myself and whatever. They told me to break like those plates and all, which I couldn't break through my bare hands like this. Then they asked me to punch it, then kick, and I was so nervous because the entire mall was looking at me. But I did it, and you know they're very nice people. So, like by God's grace, everything's been great. But there's a long way to go, and I hope that this passion of mine to just make it happen doesn't fade, and I just get inspired and motivated as much as possible. Siddharth. All I can say, see, if you ask a ordinary boy कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, so I come from a place जहाँ पर कभी कभार मुझे लगता था कि मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ ये क्या मेरी औकात में है भी या नहीं, you think like that. But I believe कि एक ordinary person के लिए क्या होता है यार, to have a nice lifestyle, to make her mother proud, to make her family proud, to make his family proud, and to live a nice healthy lifestyle. That's it. So I think तो जो मेरी जर्नी रही है फ्रॉम आई कैन से फ्रॉम ज़ीरो टू हियर, और अभी आगे और लंबी जर्नी है मेरी. सो आई ऑलवेज़ फील ग्रेटफुल, आई ऑलवेज़ फील ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने मुझे इतना मौकेस दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, और ब्लेसिंग्स हैं लोगों की, मेरे फैंस का प्यार है. अदर समटाइम आई बिलीव कि आई डोंट हैव एनीवन एक्सेप्ट माई फैंस एंड माई फैमिली. फ्रॉम द day one, my friends are always there for me. But I just believe, sometimes when I sit back and think of my past, me, my mother, my brother, when we sit together और हम जब डिस्कस करते हैं कि यार आज से 6-7 साल पहले हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, लाइक ना घर था, ना गाड़ी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारी ज़िंदगी का होगा क्या. बट देन ऊपर वाले ने, आई ऑलवेज से दैट आई फील ब्लेस्ड, आई फील ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने मुझे जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उसकी वजह से भी आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे हूँ, एंड बिकॉज ऑफ माई मदर्स ब्लेसिंग. और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आई डोंट वांट टू गो बैक, आई जस्ट वांट डू बेटर एवरी डे, एंड आई जस्ट वांट टू मेक माई लाइफ बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी डे. जब हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें पीछे भी छूट जाती है, तो उसका रिग्रेट होता है कभी? I don't think this is true. I feel कि मैं जब स्कूल में भी थी तो लोगों को लगता था कि मैं अपनी आई एम मिसिंग माई चाइल्डहुड मेमोरीज, और आई एम नॉट प्लेइंग, और आई एम नॉट लिविंग लाइक जैसे टीनेजर्स खेलते हैं वो करते हैं. बट दैट नेवर रियली हैपेंड विद मी बिकॉज माई पेरेंट्स रियली मेड श्योर कि काम करते करते ऐसा नहीं हो कि आप ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर रहे हो. बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दैट आफ्टर ऑल, आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू हाउ अ पर्सन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ टीनेजर टू एन अडल्ट. सो दैट ट्रांजिशन इज ऑल्सो हैपनिंग. सो जो आप अपनी ज़िंदगी है, मतलब अपने दोस्तों के साथ आप घूमने जाते हो, आप मस्ती करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक द फ्रेंड्स इन योर लाइफ, my family, they have played a very important role in making sure that I don't miss out on these moments which are really really special. So work एक जगह है, but personal life also I have made sure that I also have that. I have my own time with myself. आपका एक खुद का भी time होना चाहिए where you spend time with yourself, doing things that you like to do, maybe just read a book, maybe paint, or whatever you like. But I think it's very important to balance that out. Yeah, you balanced it out. Yeah, because or else it just feels like time's just slipping away, and then you don't get to have fun. Then when one day you'll wake up and you'll be like, okay, I have money, I have fame, but I don't have memories from my life, so that's not nice. So it's equally important to have a very good life and balance everything out. This is very important that you said that. You look back and you see there are no memories. Yeah, like that happens ना, because it's just right now we are at that age. I think हम इतने ambitious हो जाते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. We have to kind of also calm down and relax and be like, okay, I'm very grateful for what I have right now. I have my friends I can chill with. I can make somebody smile. Just eat pani puri. I mean, just do the basics, but Yeah. it's important to make memories. That's the reason why I travel with my parents, because जब एक ऐसा टाइम होता था, I couldn't see my father for a week because I was working so continuously. He would go to his office, I would be on set, मैं उनसे मिल नहीं पाती थी. My mom would always be with me, but ऐसा लगता था कि मेरा परिवार 3 लोग ही हैं, but हम एक साथ नहीं रह पा रहे हैं. But now I'm at that place where I can decide to take a holiday and go with my parents. That's why I travel with my parents, because I want them to
because they have been with me in my struggles, so I want them to see, you know, my good things also, good times also with them. I don't know how do I say this कि मुझे कुछ मैं मिस करता हूँ या रिग्रेट करता हूँ अपने पास्ट से. I don't miss anything because as I told you that मतलब हम लोग का जो पास्ट, जो मेरा हमेशा पास्ट रहा है, वो ऐसा रहा है कि अगर आज मैं किसी मॉल में जाता हूँ और मुझे कोई अच्छा खिलौना दिखता है, तो मैं ऐसा रहता हूँ यार मैं ये खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय इट एंड आई कैन प्ले इट. तो कभी कहता है तू बड़ा हो गया है, अब तू ये क्यों खेलेगा, क्योंकि बचपन में वो मौका नहीं मिला कभी खेलने का. बिकॉज मुझे याद है जब मेला भी जाते थे, तो मेले में नहीं वो ऐसे कॉटन कैंडीज होती थी, खिलौने होते थे, तो हम वो देखते थे, उठाते थे, प्राइस चेक करते थे, वी लाइक नहीं यार ये ज़्यादा हो जाएगा. वो भले 100 रुपये का होता था, बड़े यार नहीं ये ज़्यादा, रख देते थे. तो आई थिंक आज जो ऐसा है कि आज हम जाते हैं, अरे ये कार अच्छी है, ले लेते हैं, मैं तो खेलूँगा. तो वो कभी कभी वो एन्जॉयमेंट, आई थिंक मैं वो अपना जो मेरा बचपना है, मैं वो कहूँगा कि मैंने अपना बचपना ऐसे कभी उतने उससे जिया नहीं है. एंड आई डोंट फील बैड अबाउट इट ऑल्सो, क्योंकि आई वॉज एन्जॉइंग वॉट आई वॉज डूइंग माई जिमनास्टिक्स, आई वॉज फुल्ली फोकस्ड ऑन माई गेम. एंड देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, देन मैं इधर भी बिजी हो गया. एंड विथ माई वर्क जो भी मैंने काम किया, उस काम ने हमेशा मुझे अपलिफ्ट किया है, मुझे मेरी फैमिली को, मेरे रहने के तरीक़ों को. तो आई थिंक मैं इन चीज़ों को ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ एंड ज़्यादा मुझे खुशी होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई फील वेरी ग्रेटफुल. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि आई डोंट लुक बैक एंड थिंक यार उस वक्त मैं ऐसा कर लेता था. मेरा आज भी दिल करता है कि मुझे पानी पूरी खाना होता है, तो मैं तो जाके पानी पूरी खा लेता हूँ. क्या होता है, फोटोज ही तो लोग लेते हैं. एंड यू वर्क फॉर दैट ओनली. इफ यू आर गोइंग एनीवेयर, भीड़ लग जाए, दैट इज़ वेयर यू फील हैप्पी, दैट इज़ माई रिवॉर्ड. तो मैं पानी पूरी खाने जाता हूँ, आज भी मैं इलाहाबाद जाता हूँ, जब भी प्रयागराज जाता हूँ, जब भी, तो वो एक चाट कॉर्नर है वहाँ पे, शंभू चाट, तो मैं वहाँ जाके चाट खाता हूँ. भले अभी थोड़ा गाड़ी में बैठ के मंगवा लेता हूँ तो जाके मैं चाट खाता हूँ, पानी पूरी खाता हूँ. और स्कूल फ्रेंड्स भी मेरे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैं जिमनास्टिक्स करता था, हॉस्टल में रहता था, बहुत ही फोकस्ड रहता था अपने गेम में. एक मेरा दोस्त है जो आज भी मेरा दोस्त है, वो भी मुंबई आ गया है, और आज हम लोग साथ में बैठते हैं, चिल करते हैं, और हम लोग स्कूल की बातें करते हैं. सो मेरा मतलब जो पास्ट रहा है वो ऐसा रहा है जहाँ पर मैंने ऐसे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज ज़्यादा नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस आई वाज इन. बट येस, आई हैव लर्न अ लॉट, आई हैव बिकम मैच्योर बिफोर माई एज. जब मैं 10 साल का था तब मुझे ऐसा रहता था कि नहीं यार, अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हाउ वी विल live tomorrow or what I will do tomorrow. So I have to work, I have to do something ताकि मैं इस सिचुएशन से निकल के कुछ एक अच्छी ज़िंदगी बना पाऊँ अपने लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए. तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी उस एज में. दैट्स द रीज़न. वो एक बचपना जो होता नहीं कि आप बचपना मिस करते हो, बट मैं कुछ मिस नहीं करता. आई डोंट फील बैड अबाउट इट ऑल्सो, आई फील हैप्पी. वो सारी चीज़ों ने बहुत मैच्योर बनाया है, वो सारी चीज़ों ने मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखा है. कि अगर आज के टाइम पे अगर मेरे से कोई पूछता है ब्रो यू हैव दिस, तब भी एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ ऑल्सो एंड आई नो द वैल्यूज ऑफ करोर्स ऑल्सो. So that's the reason, these are the things which always keeps me, which always keep me grounded. Right. And I think one thing that I get from what he's saying is that during that age when we didn't have things that we have right now, एक चीज़ सेम थी, वो है बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ. बिकॉज मैं जब 13 भी थी, जब ऐसे सिचुएशंस नहीं थे, जो चीज़ें मेरे पास अभी है, द थिंग्स दैट आई कैन अफोर्ड राइट नाउ आई कुडंट अफोर्ड बैक देन. I was very grateful for what I had. So I think he also was very grateful for what he was having, like be it gymnastics or anything. We both were grateful back then and we are grateful right now. And I think that is the reason why, we didn't feel ki things are missing out, because we were busy focusing on things that are actually happening. I've always enjoyed my work. Yeah, me too. From बचपन से ही I've always enjoyed my work. तो अगर मेरा ऐसा कभी मैं नहीं सोचता कि यार मैं अपना बचपना मिस कर दिया यार. नहीं. We are very lucky. We are very very lucky. ये जो हम numbers देखते हैं कि अच्छा इतने लोग 2-3 लाख 4 लाख लोग लाइक कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, हमसे मतलब मैं I never take it lightly, because they're not just numbers, they're actually people. And when we are going somewhere, that day I was having coffee with him, so we were at this place and so many people, everybody was looking at us and everybody was like approaching us and being like, Arey, I've seen you there and we really love your work. So this is like
the biggest award I can get in my life. Like no other award really means उतना जितना मुझे लगता है कि जब लोग आपको आके बोलते हैं कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ या आपकी तरह बनना चाहती हूँ, वो बहुत बड़ी बात होती है. So we are very very grateful कि we have that impact. We have done something with our lives to have that kind of impact on people. Correct. That's the reason Baalveer and Aladdin, they are so popular even now. In fact, before the shoot only we were discussing Aladdin. Like a lot of people remember you as Aladdin. Right. Yeah. And Baalveer, I was not there. Aladdin और बालवीर का क्रॉसओवर हुआ था ना. हाँ, तब मैं नहीं थी. I told Dev कि अनुष्का भी होती तो मजा आ जाता. कितना मजा आता है. It would have been like a whole thing. But ठीक है, maybe we'll collaborate in the future for something else. My next question is that हम ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं. हाँ, मैनिफेस्ट उन्होंने भी किया ना. गाइस देखो, सपने देखते रहो. जरूर पूरे होंगे, मेहनत करते रहो. तो आप लोगों की जो फैन फॉलोइंग है, जैसे आपने कहा, इट्स ऑल द लव दैट यू ऑल हैव रिसीव्ड एंड द हार्ड वर्क. तो कभी ऐसा होता है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमंगस फैन फॉलोइंग, यू गो समवेयर एंड देयर आर others who get intimidated by your presence? See, mostly whenever I'm in a public place, and I roam around in a lot of places like that, and people approach me and they always just say good things. Like recently people who were approaching me, they were talking about Khatron ke Khiladi because I was the youngest person ever. Thank you so much. I was the youngest person ever, so they told me that whatever you did was really good. It was really inspiring and motivating. Then people just sometimes would be like, मैंने आपका काम देखा था, and that inspires me also to become an actor. So it's all positive things, and I think उन्हें पता नहीं होगा, but जब ये मुझे ऐसे मिलते हैं या मुझे ऐसे बोलते हैं कि मेरा काम अच्छा है, जितना इम्पैक्ट उनके शब्दों से मुझे होता है, आई थिंक और कुछ नहीं मुझे इतना मोटिवेट करता है. बिकॉज दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव टू कंटिन्यू टू डू दिस एंड आई हैव टू डू इट बेटर. I have to wake up every day motivated and do my best. As an actor, as an influencer also, we have a very big responsibility. Correct. Because we have an influence on these many people, so I have to make sure that I am a good person and I influence people into being good people. So so I don't think intimidating ये जो चीज़ होती है ना, वो मैंने अपनों में ज़्यादा देखा है. मतलब अपनों में तो it's not relatives or friends, but sometimes people are working with co-actors sometimes, because that happens because they just know this part of me. Fans का क्या होता है ना, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है. They grew up with me, so they know my journeys. Sometimes people who meet me, they just see this side of me, which is a certain somebody with certain followers, certain fame or whatever. So they judge you by that. They don't know my journey. Coming out of BMW, holding a Gucci bag. But now, that's the thing. But you have to see what's behind it. You have to know me as a person, and then you get to judge me. So that I see sometimes, people get intimidated by me, and I'm like, don't get intimidated. Sit with me, talk to me, and get to know my story. Maybe you'll, maybe become my friend or something. So yeah. I have stopped taking stress about all this. I whenever I enter anywhere, I enter with the thought that I am the best and I don't care about the rest. Yes. The best person stuck in the lift, but the best. I am the best. I think this is going to be a lifetime story now. Yeah. The lift going to annoy him so many times. मैं देख रहा हूँ, फंसता हूँ, ये रिकॉर्ड कर रही है ऐसे. मैं भी एक जगह कहीं फंस गई थी कुछ सिचुएशन में, उसका वीडियो भी सिद्धार्थ के पास है, तो हम दोनों ही ऐसा करते हैं. ठीक है, अगर किसी को मेरे से कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज सी समटाइम्स ना लोग आपको जानते नहीं है. लाइक इफ आई डोंट नो यू, सो वॉट एवर यू विल डू हियर, आई विल मे बी आई विल जज यू विद दैट. बट इफ आई नो योर स्टोरी, लाइक आप कहाँ से आए हो, आज आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपने कितना हसल किया होगा, कितना हार्डवर्क किया होगा, कितनी पढ़ाई की होगी. So if you know that journey, you respect that person. Correct. Even जितने भी content creators हैं, all the people who got famous from social media, I respect them too. Because see, I told you ना कि ऊपर वाला एक opportunity देता है सबको, and you just have to use that opportunity. If you are capable of using that opportunity, then you are the best, and you are doing good with yourself. So I think I respect everybody and I love everybody who is doing good and who are very respectful and who understand work and who values people. Yeah. ये जो ये लोग करते हैं ना, ये मुझे अच्छे लगते हैं. जो जिनके पास fan following आ जाती है and they become a star overnight and they start behaving differently and then they don't treat other people nicely. They don't treat their seniors nicely. वहाँ पे थोड़ा मुझे खराब लगता है. वैसे लोग से मैं खुद
बहुत दूरी बना के ही रखता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं मतलब हॉस्टल में रहा हूँ, मैंने हमेशा रिस्पेक्ट देखी है और सीखी है कि somebody is like 2 months elder to me, I have to call him sir और भैया और you know something like that. इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता बट समटाइम मैं ऐसे बोल देता हूँ किसी को भी, तो बोला डोंट कॉल मी दिस, कॉल मी बाय माय नेम। सो ये चीज़ आई थिंक रिस्पेक्ट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहीं भी इंटर करता हूँ दैट गाय इज रिस्पेक्टिंग मी, दैट्स इट। फिर वो मेरे से जेलसी फील कर रहा है या फिर वो मेरे से खुश है, दैट इज देयर। नहीं, और ना अगर सबके बारे में इतना सोचने लगोगे ना, फिर आप क्या ही कर पाओगे। मतलब देन यू आर जस्ट टेकिंग स्ट्रेस व्हिच इज नॉट इन योर हैंड्स ओनली। सो इट वाज माय न्यू रेजोल्यूशन ओनली 2 years बैक दैट आई विल ओनली केयर अबाउट थिंग्स और आई विल स्ट्रेस अबाउट थिंग्स जिनका पावर मेरे हाथ में। ये मेरे हाथ में ही नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। द ओनली थिंग आई कैन डू इज बी माय बेस्ट सेल्फ, बी माई सेल्फ, and then let them decide. So yeah, that is important. And what he said about that he enters a room thinking that he's the best, but he will not make you feel like that. Like he'll not be like, oh yeah, see, I'm the best, I'm so rich. Not like that. Only in a motivational space that yes, I'm the best, I can do it. It's in a very work hustle space. Like, it's not in a personality way which lot of people are doing these days. I'll give you an example. Like when Shah Rukh Khan enters anyway, how do you feel? You feel amazing. Yeah. You feel inspired. You feel something okay. I think he is my inspiration. Right. And you learn from that person. You don't feel अरे यार ऐसे, you don't feel like that. No. So I think एक वो जो एक presence होती है, वो जो एक aura होता है. So I always try to enter with that aura where I can spread happiness, spread positivity, not negativity or like I'm the best, not like that. Right. I am the best, I'm the best for myself. Yeah. And in my mind I'm the best so that I can do my work nicely and with confidence. Absolutely. You never thought of doing खतरों के खिलाड़ी? मैं तो देखी हर जगह, देखी ना कितना खतरा खेलता रहता हूँ यहाँ पे भी। मेरी जिंदगी में भी खतरा ऐसा चलता रहता है, तो मैं खतरों के खिलाड़ी रियल लाइफ में भी हूँ। ऐसे में लिफ्ट में अपने आप को फंसा लूंगा, ठीक है, मैं वसूली के मुंह में ऐसे उंगली करता रहूंगा, फिर मुझे काट लेता है। मेरे पैर को काट लिया था तो मैं 2 दिन लंगड़ा हो गया था। तो मैं लेकिन मुझे नहीं काटा वसूली ने। तो क्योंकि खतरों खिलाड़ी तो मैं हूँ ना रियल लाइफ का, तो ये सब खतरे में लेता रहता हूँ। तुम शो में जा रही थी सांपों के पास, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। आई वाज शॉक्ड व्हेन वो ऐसा एनाकोंडा था ना, हाँ स्नेक्स, तो एनाकोंडा से ये ऐसे पास जाके बात कर रही है ना, अगर मेरे सामने अगर एनाकोंडा वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगा फिर। तो वो यार वो बड़े क्यूट थे, लेकिन मुझे तो कहीं से क्यूट नहीं दिखते। I swear, लेकिन मुझे वो रेंगते हुए आते हैं ना जब, तभी तो मुझे उनसे दूरी बनाने का मन करता है। मुझे पता है डर लगता था क्रैब्स एंड स्कॉर्पियन से, क्योंकि वो ऐसे काटते थे ना कि मतलब वो पेन, तो सोचने ही मुझे कैसा ऐसा लगता है। एंड इंसेक्ट्स आर द वर्स्ट आई थिंक। वो जो कॉकरोचेस जो होते हैं ना, आई डोंट थिंक, एंड पीपल आर लाइक अरे वो तो डेड होते हैं। डेड नहीं होते हैं, पता है कितना, पता है होटल में आ गया था मेरे साथ बाल में एक बार, माय डैड फ्रीक्ड, ही इज लाइक व्हाट आर यू डूइंग। बट कॉकरोचेस से डरता क्यों नहीं हूं, पता है रीजन ये है, छोटे होते हैं, आप उनसे डरते नहीं हुए, आते तो आप ऐसे मार के भगा देते हो। सुनो जब वो 4 बाल्टी डालते हैं ना कॉकरोच, और सुनो तो उनकी जो स्किन होती है, दे नॉट लाइक आर कॉकरोचेस, उनका जो स्किन होता है ना उसमें आर कॉकरोचेस तुम्हारे घर के कॉकरोचेस हैं वो। नहीं, जो इंडियन कॉकरोचेस है वेरी डिफरेंट, वो मैडागास्कर कॉकरोचेस आर वेरी बिगर। देखो ना, भारत अब इतिहास बना रहा है, चांद पे विजय पा गए, सूरज पे जा रहे हैं, तो भारतीय अलग होती है, भारतीय एनिमल भी अलग होते हैं। नो बट देयर स्किन ना, दे हैव लाइक दीस लिटिल ऐसे कांटे जैसे होते हैं, तो दे रियली पोक योर स्किन, एंड वो इफ दे बाइटिंग यू ना, यू हैव टू रियली फ्लिक देम आउट, वरना वो छोड़ते नहीं है। They're like leeches. मैं देख रहा हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ। जब से देखते ना ऊपर से वो कीड़े मकोड़े ऊपर डालते हो, और वो मतलब मैं ऐसे उनको बोलती थी कि प्लीज आप थोड़ा कम डालो, क्योंकि ना आई एम 18, मैं थोड़ी छोटी भी हूँ, एंड वो ऐसे I'm like come on, but यार but कितना मजा आया। I think you should go, मुझे बहुत मजा आएगा सिद्धार्थ को देखने में। because आज ही देखो ना, चश्मा पहनेगा, I think you'll have that upper he will hand. just be like, सब ऐसे करेंगे कि जंप करे नहीं करे, he will just be like come on। मुझे ना उससे प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये इंसेक्ट्स एनिमल, हाँ उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब लिटरली अगर ऐसे लाइन भी खड़ा होगा ना सामने, दैट टाइम आल्सो आई विल बी लाइक ओके नो वरीज, आई विल हैंडल इट। बट लायनेस के साथ घूम रहा है, ओह यस व्हाई नॉट। बट अगर ऐसे ये स्नेक्स ऐसी सब चीजें आ जाती हैं ना, तब कोई कंट्रोल नहीं है ना उसमें। करेक्ट। उसको आप कैसे पकड़ोगे, अभी कैसे भागोगे? ओह माय गॉड, चूहा
ऐसे नहीं डरता मैं ऐसे नहीं डरता बट हाँ अगर तुम नकली स्नेक भी रख दोगे तो भी मैं डर जाऊंगा रियली तो तुम्हें स्नेक से डर लगता है Snake से डर और वो बहुत भारी भी होते ये रेंगते हुए जितने भी है ना रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मुझे नहीं अच्छे लगते रेंगते हुए रेप्टाइल्स अच्छे नहीं लगते बिग बॉस करना चाहोगे आप लोग कभी? हैं यू नेवर नो यार ये सब चीजें ना मतलब पता नहीं होती है हो जाती है नहीं होती है यू नेवर नो आई मीन हाँ, ऐसा कुछ इसमें यस और नो नहीं है हाँ You नो don't know. तो नहीं है बट अभी ऐसा कोई मन नहीं है फिलहाल हाँ लेट्स सी या साथ में ही जाते हैं फिर अगर जाते हैं कभी नहीं यार मैं लड़ ही नहीं पाऊंगा तुमसे मेरे से नहीं लड़ो ना मेरे से क्यों लड़ना है अरे वहाँ पे मेरे फिर साथ हो ही जाता लोगों वहाँ को पे लड़- सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट करते थे कि आप लड़ जाओ Yeah. नहीं हम साइड में बैठ के ड्रामा देखेंगे कि ओ माय गॉड वो लड़ रहे हैं हम oh my पॉपकॉर्न God. खाएंगे फिर हाँ। अगले दिन हम निकल भी जाएंगे हम गेस्ट अपीयरेंस के लिए जाएंगे हम अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए जाएंगे हाँ हाय गाइस दिस इज सिद्धार्थ निगम Hi guys, meet Anushka Sen. and you're watching us on Pinkvilla. Yes. Do subscribe, like, comment and share.